हाँ जी, बाकी लोग। मोहित किस लेवल, किस पे होता है? पवन लेफ्ट द क्लास। पवन इज लाइक मेरे को पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मोहित, कौन सा होता है सर? कौन सा डेटा टाइप होता है? मोहित आवाज़ नहीं आ रही बेटा। म्यूट तो अनम्यूट तो करो तुम खुद को। बच्चा थोड़ा तेज बोल, मुझे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही तेरी तो। मोहित लिख के भेज दे यार, मुझे समझ नहीं आ रही, बल्कि मैंने आवाज़ कम करी अपनी अब दोबारा वापस। तुषार, बताया नहीं बेटा अभी तक? बच्चों को टाइम वेस्ट करना है तो बता दो, मतलब कोई फ़ायदा तो है नहीं ऐसे। मैं भी 2 घंटे की क्लास 1 घंटे में सर मैं बोल के चला, तो तुम लोगों को अगर वो नहीं है, सर नहीं आ रहा। हाँ जी रेबा, रेबा श्रेया। हाँ बेटा स्ट्रिंग होता है। तुषार क्यों नहीं आ रही बेटा ये चीज़? ये तो बहुत बेसिक है, लाइक इट्स डैम बेसिक। और 3 4 मतलब 5 6 बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं इसको अब तक। Guys, to be very frank, even like the classes or recording is on, people who are not attending the class, or people who are attending the class just to like show as a tile to me, guys, there's no use of this thing. If you guys have like, if you guys are not trying the code, if you guys are not literally writing the code on your own, if you guys are doing this thing for a certificate, take my word on that, even if you don't attend the class, you will get the certificate, but not the Microsoft one, because for that you have to pass the exam. And I have a quite strict rule around that. For the Microsoft exam, if needed, I help only those people who attended the class properly, did the codes themselves, asked doubts and all, like studious people only. And in my experience, they never needed. So if you are thinking that so will help us during the exam, no. If you are doing this thing for the internship letter or what this completion certificate and all, you don't even need to waste this time also. You will get the certificate no matter what. No one will ask you how much you have learned. As simple as this. You don't want to learn, I have zero problem in that, like literally. I'll teach one guy, Keshav. He normally answers, he's normally attentive around the class. I'll just teach that guy. I'm happy with that. But if you want to be online in the class, if you are present in the class, I expect replies from you guys. Am I sending the correct answer? क्या भेजा बेटा तूने? मोहित नहीं, मोहित तूने ऑप्शंस भेजे थे 4 3।
स्ट्रिंग होता है, डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है, उसके बाद इंटीजर वगैरह अगर हमें लेना होता है तो हम उसके हिसाब से चेंज करते हैं अपने इनपुट्स को। सच्ची बताना किसने कोड सच्ची लिखे हैं, नहीं लिखे तब भी बता दो, कोई शर्म वाली बात नहीं है। बोल तुषार, तुषार छोटे, बोल बेटा, तूने अपने आप को अनम्यूट किया था अभी। हेलो। लिखे बेटा कोड, सच्ची बताइयो देख। यस सर, नोटबुक में लिखे हैं। अच्छा, नोटबुक में क्यों लिख रहा है? वहाँ पे कौन चेक, कैसे चेक करेगा तू कि सही है या गलत लिखे हैं? हाँ तो सर लैपटॉप में भी देख रहा हूँ, रन करके भी देख रहा हूँ। रन हो रहे हैं ठीक से? हाँ सर। अपने हिसाब से मतलब अपने हिसाब से कोई और कल की कोड्स क्लास करे? नहीं किया है। मेरे को तो देख, तू पहले भी नहीं दिखा। सर मैं तो रेगुलरली मतलब क्वेश्चन भी मैं पूछता पिछले हूँ। दो या तीन दिन से सिर्फ केशव को पढ़ा रहा हूँ, मेरे को इतना पता है, क्योंकि वही लड़का भेज रहा है। सर मेकिंग नोट्स एंड कॉपीज, नो इश्यूज केशव, तेरे से केशव आई नो अबाउट यू बच्चा। व्हाट अबाउट अदर्स? हाँ जी, और कौन कौन है? प्रिया मिश्रा, आर यू ऑनलाइन? प्रार्थना, तुषार, हाँ बच्चा, वाई एंड यू लाइक कोडिंग, लाइक करा है कोड, नहीं करा है अब तक कुछ? प्रार्थना, Sir, for past 2 days I was just in traveling, so I was not able to Okay. work in my laptop, sir. नो प्रॉब्लम। मोहित तो कभी भी होता है लड़का ऑनलाइन, देख लो यार, अगर देखो तो तुम्हें पैसे वेस्ट करने हैं, अगैन ज़ीरो प्रॉब्लम्स, नो इशू, मेरे को बहुत सिंपल है। इफ़ यू guys have noticed one thing, the class is being like normally the exact time for the class is 1 hour, it's around 2 hours, but the recording that we are giving, I am giving these days is 1 hour 30 minutes around, because that's the actual duration of the class these days, because the content is done by then, because you guys are not asking, you guys are not trying बच्चा, ऐसे नहीं आएगी कोडिंग for sure. You'll not be able to solve questions when you go for interview if you are doing like this, as simple as this, like I cannot be more blunt. You have to write the code, you have to fail, you have to come up with the doubts, because I know myself, I'm not that perfect that I like everyone will understand whatever I'm teaching. So please don't waste your money and time, because today is what, our 9th class I guess, 11 class more, for me it's like 20 class maximum. I'll be like, okay, I'll help you with something if I am able to. After the 20th class I'll not be able to teach you something at that time. So please, literally try doing things, what, like either just like write the code, whatever you're doing, whatever we are doing in the class, write the code, try those things once, even if you feel it's good, I'm there to help you with that, but I'll not be able to help you if you don't try. Decision rests with you guys. So let's start. Okay, and also we will have the class tomorrow also, uh, around
actually on the at the same time. Okay, so we were done with dictionaries yesterday. Today we'll be doing. क्लास नहीं हुई हाँ जी बेटा, कल क्लास होगी बेटा। आज नहीं हुई सर अभी तो हो चल तो रही है, अभी कर तो रहे हैं। मेरी पिछले हफ्ते वाली क्लास बची है ना, वो करनी है कल मुझे। यस ठीक है। ऑल्सो विल बी हैविंग अ क्लास ऑन संडे ऑल्सो, मोस्ट प्रोबेबली इन आफ्टरनून. I'll let you guys know, I'll inform you guys about the time. Okay, so we were done with the for loop. Okay, now we're going to do the while loop, or wait, we'll do the conditional statements first. Statements. Conditional statement is your if, else and while, I should say. Okay, so let's say we want to do something if a certain condition is met. Okay, if a certain condition is met, if statement always returns the true or false. Okay, based upon that true or false we do our thing. Let me give you a quick run through around this. Let's say I take a how many of you have ever been to a club or something, disc or something like that? Okay, no, better example, actually sophisticated example. How how many of you have ever been to that giant wheel? सर giant wheel में गए हो ना? सर आपने स्क्रीन शेयर नहीं Okay, thank you. Okay, now answer my question first. Okay, only yes sir, we went on. So there's the one thing that the minimum height requirement is 3.5 feet. No, sorry, no, not feet, I guess. Something like that, I guess. 3.5 feet, which means around 100 centimeter. Okay, so let's say we ask a user about their height. Okay, so input, sorry, height, height is equal to oh कहाँ गया बोला, height is equal to तुषार देख ले बेटा. अब क्योंकि हाइट नंबर्स में लेंगे हम, तो हमें यहाँ पे इंट लगाना पड़ेगा. ठीक है, सो इनपुट व्हाट्स योर हाइट. ओके, इफ height is less than, okay, I'll do one thing in centimeters. If height is less than 80, okay, 80, print you are not allowed on this ride. Okay, else print you are welcome. Okay, let me run this one. Let's say 75, you are not allowed in on this ride. Let me run this one again. 96, you are welcome. Okay, let's say we also have one more thing saying that if the height is more than 210 centimeter, even then a person is not allowed.
Okay, so it will give you a scenario where you have more than one, like one if statement and one else statement. So in that case we use elif. Okay, elif can have a statement height is more than 210, you are, let's say, not welcome. Again, else should always be there. Print you are welcome. Okay, let me run this one. 215, you are not welcome. Okay, so if elif else, one way of doing this particular question is using a elif statement. You can also do it via using a multiple statement inside the if. Okay, if height is less than 80 and or height is more than 210. Okay, these are both mutually exclusive events, so only one of them will occur at one time if occurring. Okay, so that's why I used the or Sir, statement. हाँ बेटा, can we use else twice here? Like else height is suppose more than 210. else if लिखा ना, अभी else if वाला किया था ना. मतलब कौन है ये? सॉरी, दो बार else लिख सकते हैं क्या? नहीं दो बार else नहीं लिख more सकता than ना. 210. अच्छा एक बात बता, ठीक है, तूने कभी बार्गेन करी है किसी से? हाँ, yes. करी है. तो ऐसे समझ आप एल्स अगर ये नहीं कर रहे तो ये होगा, अगर ये नहीं कर रहे तो ये होगा. लास्ट में हम बोलते हैं यार अगर ये, चलो ये करो, काइंड ऑफ, समझ रहे? तो इफ एल्स स्टेटमेंट भी ऐसा ही है. एल्स वाला जो होता है हमेशा कभी भी एल्स वाले में आप ऐसे स्टेटमेंट नहीं लिख सकते. एल्स कंटेन्स ओनली दैट पॉइंट जो मतलब हमारी जितनी भी कंसिडरेशन वाली जो हमारी कंडीशंस हैं, कंडीशन अंडर कंसिडरेशन कहते हैं इसे, सी यू सी कम्स अंडर इफ और एल्स इफ. ओके, जो बाकी कंडीशंस हैं जिसको हम कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, कंसिडर करना नहीं चाहते, आई शुड से, दैट विल कम अंडर योर एल्स. ओके, अब जैसे रुक जा, मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, कैसे समझाऊँ. मल्टीपल हाँ, जैसे आपका ये होता है, क्या कहते हैं, क्रेडिट स्कोर के बारे में जानते हो तुषार? हाँ, yes. So whenever we take some loan or some credit from the bank, we get a credit score, and based upon that our the new loan rates. Let's say today if I apply for a loan, I am gonna get a loan in lower rate because I had my car loan, I had like previous loans also, I have like If we everything is there, like there are 2 or 3 parameters. Yeah, okay, so there are एग्जैक्टली तो मेरा जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो कंपैरेटिवली कम रहेगा टू अ पर्सन जिसने आज तक कभी लोन नहीं लिया. yes, right. तो थिंक इट लाइक दिस, देयर आर इफ स्टेटमेंट्स. इफ माई क्रेडिट स्कोर इज दिस, माई क्या कहते हैं, माई इंटरेस्ट रेट विल बी दिस. ओके, ये हो गई मेरी CUC, कंडीशंस अंडर कंसिडरेशन. What we are not considering the else state, the condition in which the credit score is less than 300. Okay, उसके नीचे हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा क्या है, जो भी है वो सबका सब एक जगह पे है कि हाँ उनका इंटरेस्ट रेट हायर रहेगा ही रहेगा. Because if they have like had a loan, like if they had ever applied for a loan, or even if they have ever taken a loan, उन्होंने ठीक से तो रीपे नहीं किया है वो, या तो वो चीज़ है, और they have never got the loan or they have never taken a loan. So normally person who has never taken a loan, their credit score is -1. So that statement is else statement.
that comes under the else one. Once we have exhausted our CUCs, consider condition under considerations, then we go for else. Okay, till CUC the first statement is always if. All the succeeding ones are else if, elif, elif, and the last statement is always if. This is a syntax. Okay, so we can as the output we need for like height is less than 80 degree and height is more than 210 centimeters, sorry 80 degrees बोल दिया मैंने, height is less than 80 centimeter, and if the height is more than 210 centimeters, the output we need is same. So based upon that we can write a or and statement. Or statement will is basically there to give us an option where it will give us true even if one statement is correct. Okay, so if this if statement is true, this will print this thing. Else, like if the statement is false, it will go to the next statement. So if we have multiple elif statement, if we are writing multiple elif statement, we always have to take care of mutually non-exclusive elements. Let's say one condition is meeting in this one also, and the same condition is being met in the other condition also. In that case, only the condition that has been returned first will take the priority, will happen. Okay, let's say 210 है ना यहाँ पे. Let's say if I write elif height is less than 60. Now less than 80 and less than 60, they are both mutually non-exclusive. If I go for 50, height is equal to 50, in that case it comes under both of these. But if I write it like this, sorry, print randomly, I will print something, it will just take the first statement that is there, like the first statement it will encounter. Okay, let's say 50, you are not allowed on this, right? It didn't printed this, but it was right for this one also. So we try to go for mutually exclusive statements when it comes to elif. But for some reason, if we are going for mutually non-exclusive statements, in that case what we do, we prioritize. Okay, we prioritize based upon our need. Okay, else, if, else, else if. Is it clear, guys? सर Yes. सर इस और का प्रयोग दो और का जो यूज होगा दो स्टेटमेंट के अलावा तीसरी स्टेटमेंट के लिए भी हो सकता है. तीसरी स्टेटमेंट वाली बात 2 मिनट रुकते हैं इसके लिए. क्या कहते हैं पवन, सॉरी केशव, गिव मी अ मिनट, लेट अस गेट फेमिलियर विद दिस थिंग, देन आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग. ठीक है. Sir, here elif statement is specifically used like if we are creating two statement in if, then it is working. So what is specific use of elif? Like Apparently, suppose you have mentioned कि height less than 60, also it is taking height less than 80 वाला concept. हाँ. Okay. This So what is the apparently this example is like that. Okay, I'll give you one more example. We did the tax thing, remember? Were you there in this first or second class, Tushar? Tushar चला गया शायद. We went on. हाँ एक्चुअली ये elif जो है एक्चुअल में इसका मतलब समझ नहीं आ रहा. We are understanding the thing if or else but not the elif. Okay. राजकुमारी, एक्चुअली क्लियरिटी नहीं आ रहा है. कोई नहीं बेटा, समझ ले, समझा देते हैं. तुम बोलो तो सही सामने से, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है समझाने में बेटा. अभी देखो, अभी क्या है. yesterday I was not there. ओके, यू वर नॉट देयर, नो इश्यूज बेटा.
समझ एक बार एक चीज़ को। अभी क्या है, मेरा जो आउटपुट है ना, वो छोटी हाइट के लिए भी, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो लंबे लोग हैं उनके लिए भी सेम है। अगर मुझे यहाँ पे अलग आउटपुट चाहिए तो उस केस में मेरे को एलिफ यूज़ करना पड़ेगा। समझ आया? लाइक जो ये रेंज है 80 to 80 to 210, 210 है। 80, अब इसको एक चीज़ समझो, मेरे पास एक रेंज है, लेट्स से। Suppose we will consider हाँ बोल बेटा तुषार। we consider 250 height more than 250, then we can use the ellipse like आई कैन suppose we have to एज print ऑफ anything else. थिंक इट लाइक दिस ना बेटा, अगर अभी तो मेरे को हाइट में ये लिखना है मैं, क्यों भाई ठीक है, ये लोग अलाउड नहीं है। सिर्फ जो 80 हाइट से 210 हाइट तक वाले लोग हैं, सिर्फ वही लोग अलाउड हैं उस राइड पे। बाकी लोग अलाउड नहीं हैं। 80 सेंटीमीटर हाइट से 210 हाइट, मतलब समवॉट लाइक 7 फीट तक लोग अलाउड हैं। कितना 3 फीट अराउंड, लाइक 2 पॉइंट समथिंग फीट से 7 फीट तक लोग अलाउड हैं बस। अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन को। लेट्स से मैंने बोला था कि 80 से कम वाले तो अलाउड ही नहीं है, और जो हाइट 210 से ऊपर वाले हैं उनके लिए हमने कुछ और करना है, मतलब उनको हमने किसी और राइड पे भेजना है, या फिर उनको अलाउ तो हैं लेकिन उनको सिर नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके केस में आउटपुट अलग होता ना मेरा, उनके केस में मतलब अगर 210 से ऊपर तो मेरा आउटपुट अलग होता ना हाइट से, मतलब जो छोटे बच्चों वाला है वो उससे। समझ आइए वाली बात? प्रिंट मुझे कुछ और कराना पड़ता ना उस केस में। Okay. बस उस केस में हम एलिफ यूज़ करेंगे। अभी तो हमारा क्योंकि आउटपुट सेम है इसलिए हम और एंड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम ये नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है राजकुमारी, समझ आ गया बेटा? नहीं आया, क्लैरिटी नहीं मिल रहा। क्लैरिटी नहीं मिल रही, कोई आई दिक्कत मीन नहीं। जो रेंज है 80 to 210 का, अगर उस बिटवीन में आया हाँ। तो दे आर वेलकम। इफ दे आर नॉट देन एल्स वाला लग के एंड देन वो प्रिंट होगा। तो फिर एलिफ का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अच्छा एग्जाम्पल चेंज करते हैं। ब्लड डोनेट किया है कभी राजकुमारी? हाँ। 16 से छोटे को करने देते हैं? नहीं। सीधा सीधा मना कर देते हैं ना। हाँ। 55 से ऊपर वाले को करने देते हैं? नहीं। नहीं, 65 तक करने देते हैं एक्चुअली, बट 55 से ऊपर वाले को एक मेडिकल छोटा सा टेस्ट कराना पड़ता है जिसमें उनके बाकी सारे पैरामीटर्स भी चेक होते हैं साथ साथ। ओके। मतलब जो हमारे पैरामीटर्स चेक होते हैं, लाइक व्हेन आई गो फॉर अ ब्लड डोनेशन दे नेवर चेक माय बीपी, ओके, बट इन द केस ऑफ 55 अबव दे ऑलवेज चेक द बीपी, दे हेमोग्लोबिन चलो हमारा भी चेक होता है, ये 2-3 चीज़ें और चेक होती हैं, उनकी शुगर वगैरह भी चेक होती है साथ साथ। ओके, सो अपेरेंटली द सिचुएशन इज डिफरेंट ना। अगर हमें अब इसको अब 65 से ऊपर वाले को केस को देखते हैं, 65 से ऊपर वाले को मना कर देते हैं वो डायरेक्टली, यू आर नॉट अलाउड बोल देते हैं। तो जो 16 वाले से नीचे वाले हैं और 65 से ऊपर वाले हैं वो सेम सिनेरियो में हैं, वो सेम है, वो अलाउड नहीं है। बट 55 से 65 वाले हैं जो लोग, वो एक अलग सिनेरियो है ना, अलग केस है ना हमारे लिए। केस किस तरीके से समझते हैं? तो वो जो अलग केस है वो एलसिफ में आएगा। Okay, mean they are allowed, but there are some TNC. Outputs different है ना। हाँ। Now when you go out with your friends, you will not treat everyone with the same respect, and I should like with friends I shouldn't say with the same respect, with the same disrespect. Like I sometimes abuse my friends, but like not my basically my fast friends, I abuse only them. There are some like work friends also, never abuse them, don't care about them also. So cases are different. If they are my friend but they are work friend, I will not abuse them. If they are my friends, they are my college friends, they are gone, something like that. So whenever we have the same output for for certain cases, we keep them as a single statement using or and, okay, or basically है ना। and if we have multiple like different outputs based upon the conditions, we keep them as a different cases,
समझ आ गया? हाँ Like it's not binary. It's something like we can have different cases. We can have different medicine for different thing, different patients. Okay, yeah, got it. good. Like okay, I just came around with a one more example. What medicine do you have when you have fever? Paracetamol. Yeah, generally we do. Hmm. What medicine do you have when you have headache? Same, paracetamol. Like doctor prescribes it like that. But what medicine will you have if you have a toothache? Actually, I had a dentist appointment a week back, so I remember all these. So cases is different, na? If I have to, if have to have toothache, eat ketorol. Different medicine, different case. Got it? क्लैरिटी आ गई बेटा? मुबारक हो. ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे मेरे को ही मज़ा आता पढ़ाने में. ओके चलो फिर एक छोटी सी चीज़ करते हैं. फर्स्ट क्लास में वी डिड वन थिंग जहाँ पे हमने आपका ये बनाया था इनकम टैक्स स्लैब्स के बेसिस पे आप लोगों ने वो लिखे थे सबके, मतलब हमने एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया था. टुडे लेट्स यूज़ दैट नॉलेज एंड create a program for not more like we can just use these 4 slabs. Okay, from salary from 0 to 10 lakhs कितना टैक्स बन सकता है उस इंसान का. ठीक है, whatever their income is, like you will take the input as the income and whatever their, like yeah, just the input as income, and based upon that you will give out the salary, sorry, give out the income tax. Okay, is it clear? Like you get the idea how to do that? तुषार चला ही गया वो लड़का मुझे लग रहा है. Yes sir, yes sir. समझ आ गया कैसे करना है? You have to take a input as a like total Income. salary, total income. You can also take it as salary and multiply it by 12. And after that, based upon Okay. that, you have to like you will write the if else statements in which slab that particular amount is, and based upon that you have to give out the tax, like the total tax amount, Income tax. income tax. Okay, try it. In this case you will be using and statements. Okay, because the amount should be more than 2.5 lakhs and less than 5 lakhs. Okay, like both the statements should be true, not the one. You'll be using and statements.
Yes, the question was like, if you remember, in the second class we did the flow chart for these tax and all. So you have to write the program for that. Not like you can just add for statement in that from like 0 to 10 lakhs. Okay, and add a else statement for, let's say, 20% only. So you have to write a program to calculate the tax of a person based upon his salary or based upon his income. Okay.
Is it done, guys? On it. कर बेटा. हुआ गाइस? हाँ जी. सिंटैक्स एरर. बेटा तेरा सिंटैक्स एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इफ़ के बाद वहाँ पे ये नहीं डाला है. ठीक है, एक वो डालेगा आगे, वो जितना भी जो भी प्रिंट वाला स्टेटमेंट है उसको एक टैब दबा के लिखना. ठीक है, वो हो जाएगा. यू कैन नॉट कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग. ओके. प्रार्थना, यू नीड टू यूज Keshav.
You need to use commas there, not the plus sign. Yesterday when I was doing something, I told you guys ना that you cannot add a plus sign. Concatenate नहीं कर सकते अगर वो दो अलग अलग डेटा टाइप का है तो. Income is equal to 25 lakhs. Sorry, 2.5 lakh. Income is more than 2.5 lakh on and less than this. प्रार्थना बेटा 5% above 2.5 lakhs ना. Excuse me, sir. एक सेकेंड बेटा. Prathna, everything is right. Like the setup is the architecture is right, but the way you have calculated this INC ना, that is wrong. हाँ बोलो बेटा, जो भी था. Sir, my syntax error I am not able to resolve. नाम बताओ अपना. भेजा है क्या ग्रुप में? तुषार का देखा मैंने अभी. हाँ. अरे क्या कर रहे हो यश? ऐसे नहीं होता बेटा. देखो अगर तुमने क्लासेस अटेंड करी होती और तुमने ये चीज़ अभी देखी होती ध्यान से तो ये प्रॉब्लम ना आ रही होती. अच्छा ये देखो, छोड़ो जो हो गया हो गया. अब आगे का देखते हैं. बेटा इफ स्टेटमेंट. तुषार तेरे कोई नहीं बेटा, कोई नहीं. अब मत करना. देखो कुछ नहीं फर्क पड़ता, आगे का ध्यान रखना. ये चीज़ है. ये एक तो आपने यहाँ पे कोलन लगाना है और अगला जो लाइन लिखना है ना, आप जब यहाँ पे कोलन लगाओगे, सेमी कोलन लगाओगे, तो आप जब एंटर मारोगे वो आपका पहले ही 4 स्पेसेस आगे आएगा. इसको इंडेंटेशन कहते हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बिना पाइथन नहीं सीख पाओगे अगर ये चीज़ नहीं आती तो. इफ़ के नीचे का जितना भी, अब तुषार जो तेरा वाला कोड है, एक खुला है ना मेरे साथ. सर वेट अ सेकेंड बेटा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. केशव ही था ना. तुषार जो इफ जैसे टैक्स और जो प्रिंट टैक्स वाला है ना, उसको 4 स्पेसेस आगे कर. ठीक है. और जैसे हाँ पूरे में वैसे कर, तेरा कोड चलेगा, ये सही से चलेगा. इनकम माइनस 2.5 लाख. वेरी गुड बेटा, तुमने कैलकुलेट भी सही किया है. प्रार्थना, डू वन थिंग. सी तुषार कोड, आई एम सेंडिंग इट अगेन ऑन द ग्रुप. He has done it properly, the calculation side, but he didn't do the indentation properly. So 5% above in the sense it should be added with existing amount. No, bacha, it's not like that. It's like let's say if the total income is 3 lakhs, so 5% will be on the 50,000 amount. Okay, above 2.5 lakh ना. So 50,000 का 5% कितना हो गया? 2.5,000. तो ऑलमोस्ट दैट विल बी द टैक्स. हाँ जी सर, सिंटैक्स एरर आ रहा है सर. इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 2. यश तुषार इफ स्टेटमेंट. हाँ सेम मेरे इसमें वही आ रहा है. कोड भेजो और लाइन. एक सेकेंड. सेंड कर दिया है. तूने नया भेजा है, मेरे पास क्यों नहीं आया है? सर अभी भेजा मैंने. लेट मी वेट. आई डोंट नो, माय वाईफाई इज काइंड ऑफ फ्लक्चुएटिंग टुडे, स्पेशली मेरे फ़ोन का. ओके तुषार तेरे को मैंने बोला ना, जो टैक्स इक्वल टू 0 वाली लाइन है और प्रिंट टैक्स वाली जो लाइन है, पूरी को सिलेक्ट कर एक बार मेरे लिए. सर क्या सर, एक बार एक काम करिए, वाला कोड ग्रुप पे भेज, एक बार चैट पे भेज, मैं करके दिखाता हूँ तेरे को. ठीक है सर. तो तुषार ना, दोनों को एक साथ प्रॉब्लम हो रहा है. सेम गलती कर रहे हैं दोनों. ये बदतमीजो.
नहीं बेटा, तुषार तेरा तो पूरा, जो तुषार दूसरे वाला है, तुषार ठोटे, आपका तो बेटा पूरा गलत हो गया है, आपका काफ़ी गलत है। मैं समझा रहा हूँ अभी, ये वाला भेज दिया चैट पे। सर रन नहीं सर हो रहा चैट पे को। कैसे भेजना है? अरे इस वाले चैट पे बेटा, जो ये गूगल मीट वाले चैट है। इसका नाम क्या है? किंग, सॉरी किंग कह रहा हूँ, केशव। अब हो गया बेटा रन? यस सर, एक बार चेक कर लो सर। केशव केशव केशव, हाँ आपने भेजा है, वेरी गुड बेटा। लेकिन थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे ये 90,000 इनकम। एक सीन क्या किया इसने, ये एल इक्वल टू इनकम बाय 5, ये क्या किया? माई इनकम इज दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो के एल एम आपने वो किया है ना केशव, उसके बाहर आपको इंट लिखने की Yes, sir. ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो इनकम लिया है वो इंटीजर में लिया है, ठीक है? सर अगर लिख भी दिया तो नहीं नहीं, फ़र्क कोई नहीं पड़ रहा, मैं बस बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। लिख दिया तो कोई गलत नहीं हो रहा है कहीं। इफ इनकम इज, योर इनकम इज सैलरी इंट के, क्या किया बेटा? 5 से मल्टीप्लाई किया है। ओके 100, ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। इफ इनकम else if income is less than 2.5 lakhs, your सर मैंने income is, माइनस नहीं किया है। ओके नहीं बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती है, बाकी तरीका बहुत अच्छा है, गुड जॉब। लाइक द वे यू हैव डन द डिवाइडेड बाय 100। एक बात बताओ केशव, थोड़ा ठीक से लिख कोड। कोड सही है, कोड काम सही करेगा, कोड सारे के सारे यूज़ केस भी चेक करेगा, बट कभी कभी होता है कोड ना, जैसे इंटरव्यू के टाइम पे कोई बंदा पढ़ रहा है, तो आपने ना इसको थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? एक्सक्यूज मी सर, सर पूरा एल्स और एलिफ वाला भी भेजना है? बेटा पूरा का पूरा एक कंट्रोल ए करके भेज मुझे एक बार जल्दी से, मेरा या तो मैं लिखूँ नहीं तो। सर एक्चुअली मैं क्लास फॉर्म पे लगा रहा हूँ, और जो अच्छा program अच्छा अच्छा, laptop पे रहने दे program रहने दे तो- रहने दे रहने दे रहने दे, फिर कोई नहीं। इफ लेट्स से इनपुट लेते पहले, INC इक्वल टू इंट इनपुट। जिसने ये नहीं किया है वो पहले ही गलत कर चुका सब कुछ, तो उसका तो नहीं आएगा। आई गेस यश ने कुछ गलती कर दी ऐसे। हाँ, यश आपने इनपुट लिया ही नहीं है, ठीक है? सो दिस विल आस्क अ यूजर फॉर इट्स। लिया नहीं। कहाँ लिया है बेटा? ओए कहीं नहीं लिया तूने, तूने यूजर से नहीं लिया, यूजर से नहीं लिया। रुक जा, यश यश, केशव नहीं कह रहा बेटा, मैं यश कह रहा हूँ। ओके, इफ ओके INC इज लेस देन, कोई प्रॉब्लम नहीं, 250,000, 1 2 3 1 2 3, ठीक है? इफ INC इज लेस देन 2.5 lakhs, ठीक है, प्रिंट नो टैक्स, हैप्पी पीपल, ठीक है? एलिफ INC is less than, or INC is less than, sorry, more than, equal to 250,000, 250, 1 2 3, and INC less than 5 lakhs, 1 2 3 4 5, okay? Tax is equal to, tax is like I guess 5% over 2. 0 point, हाँ, so तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है?
0.5 से मल्टीप्लाई कैसे कर, 0.05 से करेंगे बेटा मल्टीप्लाई उसको। एक सेकेंड, नहीं सॉरी मैंने गलत बोला, माय बैड। उसको 1/20 से डिवाइड करेंगे हम एक्चुअली। सबका अलग अलग तरीका हो सकता है ये, ठीक है। INC टैक्स इक्वल टू INC प्लस INC डिवाइडेड बाय 20, ओके। प्रिंट टैक्स एलिफ, आई डू वन थिंग, मैं ना इसी वाले को कॉपी करूँगा थोड़ा सा, Ctrl+C, सॉरी, ओके। ठीक है, इज मोर देन 5 lakhs and less than 750,000। हाँ जी बेटा, सर मैंने कॉल में मैसेजेस में भेज दिया है। तूने लिखा ही पूरा? यस सर। बच्चा मैंने लिख लिया था, चल ठीक है, मैं अब तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ उसे। मैंने तो कह तो दिया था मत भेज अब, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने एक गलती करी है यहाँ पे। INC सॉरी टैक्स ही प्रिंट कर रहे हैं ना हम। INC माइनस, हाँ 250,000, 250,000 by, this will be the tax, sorry, okay. And the second slab is 10%, 12,500 plus 10%, so it will be 12,500 plus INC minus 5, 1 2 3 4 5, 10% है, so I'll just divide it by 10, okay. After that next slab is 15% plus 37,500, 37,500 plus INC minus कितना था, 7.5 से above पे है ना, 750, 1 2 3, 15 करना है तो 100 यहाँ कर दो, सॉरी, ओके। जो 0.5 वाला बोल रहे थे ना, कोई बोल रहा था, मुझे नाम नहीं पता, 0.05 वाला वाली बात वो, ठीक है। और लास्ट में मैं एक एल्स स्टेटमेंट दे रहा हूँ, INC मोर देन 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रिंट टैक्स, लेट्स से वी गो फॉर 20% ओनली, टैक्स इज इक्वल टू कितना है वैसे वो, 75,000 प्लस 20%, 75,000 प्लस INC डिवाइडेड बाय 20, सॉरी डिवाइडेड बाय 5, ओके। प्रिंट टैक्स, लेट मी रन दिस वन, इनवैलिड सिंटैक्स मेरा भी आया कहीं पे, क्यों, अच्छा सॉरी, ओके, हाँ एल्स में वो नहीं आएगा, माय बैड बेटा, माय सॉरी दैट, ओके। इनकम लेट्स से 11 लाख, 1 2 3 4 5, कितना आना चाहिए, वैसे मैंने गलत कर दिया है तो आंसर गलत आएगा, ये मैंने कोड में गलती कर दी है गलती से, 295,000 आ गया, वैसे ये आना नहीं चाहिए था, INC माइनस 10 लाख भी होना था,
1 2 3 4 5 हाँ 1 1 1 2 3 4 5 97,500 which is basically 75,000 एक सेकेंड एक सेकेंड 97,500 है ना वो कुछ गलती करी बेटा मैंने एक सेकेंड रुक जाओ जरा ये आना चाहिए आपका 95,000 ना 1 2 3 4 5 95,000 ठीक है इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं टैक्स इज समथिंग लाइक करके ऐसे करके सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ स्मॉल सिस्टम हैविंग अ like that can give you a idea about what will be your tax. Obviously there are deductions and all also. We are not going to be learning about that because we are not in a CA class, we are in a Python class, but this is how you can do it. Is it clear guys? Any doubts? No, sir. Change No. Okay. Enter the right choice. Okay, yeah, good. No. Okay, good bacha. Okay, now a question for you guys. You have to take a input from a user in the form of their phone number and you have to check whether that phone number is correct or not based upon like Indian system. There are two things that you have to check. 10 digits are there. Okay, and as of now the number can start from 5 like 5 something also start like and the maximum number like maximum first number is 9 these days, so try that. Sir, Yes, sir, yes Keshav. सर इसमें नंबर 5 और 9 से स्टार्ट होना चाहिए. नहीं 5 और 9 से आजकल हो रहे हैं ना 5 6 7 8 9 मतलब ऐसे ही नंबर आ रहे हैं ना आजकल 5 तक भी आ रहे हैं नंबर और बस मुझे याद नहीं है Yes, मतलब sir. तो मतलब आपको वो रेंज चेक करनी है कि उसी रेंज में नंबर हो लाइक व्हेन यू ऐड योर नंबर समवेयर तो वो बताता है ना कि Yes, sir. नंबर सही है कि नहीं है एंटर वैलिड नंबर सो यू हैव टू मेक अ प्रोग्राम Yes, दैट sir, कैन लेकिन- चेक योर नंबर फोन नंबर यस सर, लेकिन सही कितने में होना चाहिए, 10 डिजिट में कि 5 और 9? 10 डिजिट में बेटा 10 डिजिट में एंड लाइक यू कैन चेक इट लाइक दिस 2-3 तरीके हैं तो करने के जैसे मर्जी करो एक तो है कि 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए Yes, sir. सेकेंडली जो फर्स्ट नंबर होना चाहिए वो 5 से लेकर 9 तक होना चाहिए Yes, sir. 2 कंडीशन चेक करानी है वो चीज़ ट्राई करो अगर हो कर सकते हो तो Okay. जल्दी करो
हुआ गाइस? सर इफ फर्स्ट का इफ तक आ रहा है सर, एल्स में क्या लिखना है वो नहीं आ रहा है। अरे कुछ भी लिख दे, नंबर इज करेक्ट। एक सर तो वो जैसे मैंने और सर मोबाइल if नंबर। अरे क्या कर रहे हो बेटा, गलत हो गया ये तो। किसने लिखा है ये? तुषार गुप्ता गलत है बेटा। तुषार ही बोल रहा है क्या? yes, सर लेंथ ऑफ अ मोबाइल नंबर इज मोर देन 10 और लेस देन 10। इससे अच्छा तो मोबाइल नंबर इक्वल टू 10 ना करा ले था। अच्छा एक चीज़ और। अच्छा एक बात बता, मान ले व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ पॉसिबल। मैं तेरे को एक लाइन में इसी करके दिखाता हूँ। हाँ, so 1 5 1 5। जो सर आप दिया उसके हिसाब नहीं से नहीं, मतलब आज अभी एज ऑफ नाउ 4 से करके तो नंबर नहीं आए हैं शायद, है ना? 5 से आ रहे हैं। 5 6 तो क्या नंबर मिनिमम हो सकता है इस केस में? 5 5 के बाद 9 जीरोज नहीं हो सकते? यस और मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है? क्या? 9 हाँ, 10 टाइम्स 9। क्वेश्चन हो गया बेटा तुम्हारा। क्वेश्चन सेम है करने के, दो तीन तरीके। मैंने बोला 2-3 तरीके हैं यहाँ पे। दिस इज अ लाइक बेस्ट वे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक इफ स्टेटमेंट आएगी आपकी। ये देखो इनपुट, सॉरी फिर से वही आ गया। नम इज इक्वल टू इंट इनपुट व्हाट्स योर मोबाइल नंबर। ओके, if num is less than 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 or num is more than 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 print number invalid, else print thanks। अच्छा क्या? नाइन 716017643। अरे इनकम पे आ गया ये तो। 9716017643 थैंक्स। ओके, ये नंबर है 597160176436। नंबर इनवैलिड। ओके, मुश्किल था ये, 4 लाइन क्वेश्चन था ये, 5। So I'm having a doubt, sir. या So usually when we assign numbers to variables such as num, whether it will be counting the length of the variables which are being present over there or the numbers which are being present, sir. the length will not be counted in this case. Like I But can how in this case it will be estimated to 10 digits, sir? बचा Because we are assigned if num is less than 5 and number of zeros followed, and or is being given followed by num greater than these much lines. exactly. So in this case, Yeah, how the it will be thing validated, is, sir? yeah, in this case it will not be. If you want to do it like that, I told you, there are 4 or 5 ways to doing this question. If you want to do it like that, so let's say I just remove this int. Okay, if length of num, sorry, if length of num
is equal to 10, and like we want both of these statements to be right now, and num1 num0, sorry, the first number that is there is in range. Now the range will be 5 to 10, because 10 will not be included, 9 will be included. If num0 is like that, no, I should print thanks here. Okay, Okay, sir. wait, invalid syntax कहाँ आया? Why? और num0 is okay. It will be numbers. My bad. hmm. I'll just change this one to int in that case. अब कहाँ आया? अभी भी वहीं आया. और wait a second. Is sorry, 59716017643. Yeah, 97160. It should be 1764. The number is invalid, right? And now I'll add my real number. Arey yaar. I'll just do this. It's coming at the down bottom only. Seven 1601764 Thanks. Okay, so based upon the way you are taking the input, you can do it in other ways also. Like the previous example that I wrote, I took the input as an integer. Okay, in this particular one I took it as a string, but there's a flaw here. Let me run it again. Like why my first preference was taking it as an integer was this 971G0176643. Even this will be okay, but actually the number is not correct. That's how we have a data noise. Okay, Pratna, like why we cannot do it like that, this. Okay, sir. Okay, but this is the way you can work around with these things. Okay, got it? Any doubts, guys? So, even if we get the input in form of string, can we make use of parse string to convert it into integer? Pardon? Like if you are getting value in form of Yeah, string, you can do that. You can do it like that. As of now I'm taking it as an integer now, so I can just write it like this also. That is also an option. Int num, or you're asking something else? I was mentioning parse integer. Pass statement, as in Parse of it. I can like Like we'll be converting into integer number. pass. Not PARS integer. PARSE. Parse is there, like parse has a different like it's a somewhat different thing,
Apparently we are also doing the same using these functions over here. Parse, parsing we can, but again, why to get a whole new library imported for the system? So this one is kind of easier. Actually the thing is, when you will sit for your this thing sit for your interviews and all, they'll ask for like the codes, like I guess this guy wrote a code, Keshav wrote a code in the for that income tax thingy. The code was right, properly written, no, I shouldn't say properly written, but the output was right, everything was right, but the way he was writing it now, like if you can see, he made for three variables initially only. Code was right, but if a person is reading that code now, like it will pass through the coding round properly, he'll pass through that. But when he'll go for a technical interview round, over there you don't know the person sitting in front of you, how much knowledge that guy has. So you should always try to write as simpler code as it can be. Okay, like like there are test cases in your interview exams and all, there are test cases, so you'll know how many test cases the code has passed. So if the code pass like 90% of test cases or more than that, even the 100%, then even the code is written in a, like what should I say, uh, in an easier way. It's good, like easier is more, what should I say, more scoring than writing a harder code. Because when machines are there, apparently a machine will work properly, but what if a person sitting in front of you doesn't understand the code in first glimpse? Like it happened to me when I was reading Keshav's code. I was like, kya kiya isne? Then I had to get into it properly, got into it properly, and then I was like, okay, he did it well, but the code, the way he was writing it, it was kind of easy, kind of difficult. Okay, so you should always take care of this thing, because even the interviewer, it's not their fault also, they have to take like around 20-30 interview in a day. They cannot like just start reading a code over there, so they're like, okay, समझ आया ठीक है, नहीं आया तो गलत है. Sometimes it's like that, but sometimes you'll find someone who's like, okay, I'll give you my time also, something like that. So don't risk that thing. Okay. Yeah, sure, sir. Okay. Okay. She sent. Sir, it's printing invalid. Number of length is equal to length. No. What's happening? What was happening over here, Pratna? So it is printed invalid because even though the number of digits was 10, it was printing invalid here. You must have added the space before this. Yes, you added a space. Okay, sir. Before you wrote the question, wrote the this number, you added a space there. Okay. Any other doubts, guys? Anyone else? केशव समझ आ गया बेटा? Yes. तुषार? I have none. हाँ जी राजकुमारी. बेटा आवाज कट रही है. आवाज कट रही है बेटा तेरी. With 10 number, it should be invalid. Now why it's 10 digit and it's valid? Where बच्चा? In this In this code. प्रार्थना आवाज कट रही है बेटा आपकी, ठीक से नहीं आ रही, या तो आप क्वेश्चन लिख के भेज दो, या थोड़ा सा नेटवर्क में आ जा.
Am I audible? Yes, you are. Yeah. So they were out. बच्चा कट गई, आवाज़ आवाज़ कट गई. तू लिख के भेज दे बेटा. राजकुमारी लिख के भेज दे बेटा. लिख दे, मैं वहाँ से कर दूँगा. मेरे को आवाज़ आपकी ठीक से आ नहीं रही है, Okay. कट रही है आपकी आवाज़ ना. ओके. We are talking about digit, that it's counting the alphabet as a number. हाँ राजकुमारी बेटा, मैं वही समझा रहा था उस टाइम पे, that why we cannot take it as a string. Okay, why it can be a issue. So it can be a issue because of this issue, this thing only, because we are not talking about the numbers. If we are taking it as a string, we are taking it as a string only. We are not taking it as an integer. When I took it as a string now, so this can be a issue over that. That's why I was taking it as an integer initially. Okay. Okay, bachcha, ठीक है. Okay, so we are done with the if else statements. Any doubts? I'll do one thing, guys. Go to this if else hacker rank पे है. हैकर रैंक पे जाओ आज रात को, ठीक है. कल छुट्टी है सबकी शायद. इस पे अपना वो बनाओ, हैकर रैंक अकाउंट बनाओ अपना. इफ एल्स क्वेश्चंस, ट्राई डूइंग दीज क्वेश्चंस, बिकॉज बीइंग फ्रैंक एग्जाम में जब आप लोग करने बैठोगे तो यही आएंगे जो आपके वो वाले एग्जाम्स होंगे, ठीक है. ये रहे क्वेश्चंस, इनको एक बार करो पाइथन में, ठीक है. ट्राई करो आज एक बार इस चीज़ को. कोई क्वेश्चन ना हो, सेंड इट टू मी, आई विल हेल्प यू. ओके. सब एक बार लॉग इन करो. एवरीवन लॉग इन इनटू, साइन अप फॉर हैकर रैंक. ट्राई दिस क्वेश्चन. No matter what, how many questions you do, but do some, at least 5. Okay. नहीं होता मेरे से पूछो, मैं कराऊंगा. मतलब मैं उस टाइम, मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल बी promptly available, but I'll help you with that question. Okay. So that's it for the class today, guys. Let's meet tomorrow same time. Thank you, sir. Good night. Good Thank you, night. sir. Yeah, good night, guys. Thank you. Good night. Good night, guys.